एग्जीक्यूटिव में वी आर डूइंग प्रेसिडेंट, राइट? एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड कॉर्पोरेट वीटो. And there is one called qualified veto, but that qualified veto is operational in US polity, not in Indian polity. Now, this is the president power in relation to the union legislature, right? Or law passed by the parliament. Now we will talk about the president's power in relation to over the state legislation. The president has also some power. For example, when the state legislature, pass the law, pass the bill, it goes to the governor. Yes. Now governor has 4 options, right? इनके पास 3 options होते हैं, वो इन तीनों options उनके पास होते हैं. चौथा options होता है the governor transfer the bill to the president for consideration. Fine, that we need to talk about today. So, right, the president's power over the state legislation. Presidential power over the state legislation. Yeah. In the last class, we talked about the president's power over the union legislation. Next one. In the last class, we talked about president power over the union legislation. So when the Rajya Sabha and Lok Sabha both, passes the bill, it goes to the president. Yes. And then president has different options, right? Give the assent, withhold the bill, return the bill, right? Or take no action. And that we talked about different kind of veto, right? Absolute. Then we talked about suspensive. Then you corporate. Similarly, the president has, power over the state legislation, right? So, if the state legislature passes the bill, it goes to the governor, and then governor has many options, right? To sign the bill, to withhold the bill, to return the bill, right? Or take no action, or transfer the bill to the president for his consideration. Fine? Got the idea? Now the president has again same options. Either sign the bill or send back to the bill, right? Or to the legislature to or withhold the bill or take no action, right? So you write it. Presidential power over the state legislation, that is the topic, and you write when a bill passed by the state legislature, the governor, state legislature, it is sent to the governor, right? When a bill passed by the state legislature, it is sent to the governor for his assent, her assent. Now the governor has following options. Now governor has following options. क्या क्या होता है? First देखो. Now the governor has following options. First,
to give assent to the bill. And the bill becomes an act. Second, withhold the bill. Third, to return the bill. To return the bill, or to return the bill to the House. For reconsideration. Fourth, does not take any action. ये भी होता है. Fifth, to transfer the bill. To transfer the bill to the President. For his consideration. कितने ऑप्शंस हैं गवर्नर के पास? ठीक है? Ready? Noted down? Done? युवराज? No, sir. लिखिए फिर. Done. Right. When the governor reserved the bill for the consideration of the president, when the governor reserves the bill for the consideration of the president, comma, the president has following options. The president has following options. He may give assent to the bill. He may give assent to the bill. He may withhold the bill. Third, he may direct the governor. He may direct the governor to rescind the bill to the House for reconsideration. For reconsideration. Fine. When the bill again passed by the legislature, it is again sent to the governor or president? President. Yeah. प्रेसिडेंट के पास से आया है तो गवर्नर अब खत्म हो गया, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा फिर से. When the bill again passed by the legislature, it is sent to the president. Is president bound to sign here? No. Right? The president is not bound to sign, or the president is not bound to give assent to the bill. It means he may give the
assent or he may not give the assent. You can send back again. Huh? You can send it back again or no? He can send it back again. Yes. The Constitution does not talk about it. Whether he may give assent, he may send assent, right? Yes. So he has more discretion over the state legislature. Fine, the more power. Making sense, हिमांशी? तबीयत ठीक है? नहीं? यहाँ पर बहुत लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफी एक सप्ताह से। एक दिन तो मैं भी डर के अपना मास्क पहना या उसका छोड़ दिया पहनना। शुभम को भी अच्छा है। टैबलेट लेके आए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया। शुभम बोल रहे कि तबीयत खराब है। खाने से तबीयत खराब है या ना खाने से तबीयत खराब है? Fine. Let me tell you one thing. If state legislature passes the bill, right? It's sent to the governor. Now, when governor again sent it to the state legislature, and the state legislature again pass it and send to the governor, is it binding for the governor to sign the bill? Yes. Yes, it is binding for the governor to sign the bill. ठीक है, ये ध्यान में रखना। Fine. चलिए, ये कर लिया तो अब should we talk about pardoning power of the president? चलिए। Pardoning power of the president. आर्टिकल नंबर क्या है? या आर्टिकल 72 of the Constitution. Article 72 of the Constitution empowers the President to give pardon. Who have been pardoned to the person who has been sentenced of any offense. Right? Of any offense as follows. First, for the violation of union law, second, court martial, first violation of the union law, second, any punishment or sentence given by the court martial, third, if sentence is sentenced to death or capital, sentence of death. If sentence is sentenced to death, right? He can pardon in three criteria. If any sentence is sentenced under the union law. Secondly, if that sentence is the sentence of given by the court martial, and third is it is sentence is a death sentence. There are 5 types of pardon power. Pardoning power. एक तो होता है सिंपल पार्डन, सिंपल नहीं होता है, बहुत बड़ी। लेकिन पार्डन क्या होता है, क्या मतलब होता है? पार्डन मीन्स टू सेट फ्री, टू सेट द पर्सन फ्री, to set the person free from death sentence.
मूवी में देखा है पार्डनिंग के लिए अर्जी लगाते हुए. पार्डन मतलब कहता है टू सेट द पर्सन फ्री फ्रॉम डेथ सेंटेंस. सेकंड इज कॉल्ड कम्यूटेशन. कम्यूटेशन मीन्स सर ये ऊपर वाला कौन सा सिंपल पार्डन? pardon, simple pardon कहा जाता है. There are 5 types of pardon. One is pardon. Second is commutation. Commutation means alternative punishment. Right? अब किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, right? उसको क्या करते हैं? जेल सेंटेंस कर देते हैं. Right? You can write to give an alternative sentence. To give an alternative sentence. Okay. For example, death sentence can be commuted to life imprisonment. Life imprisonment. Right? And then it's called remission. Remission. Right? So commutation means जो ओरिजिनल सेंटेंस था डेथ सेंटेंस उसको बदल के हमने क्या कर दिया, एक सब्स्टिट्यूट में दूसरा सेंटेंस दे दिया, अल्टरनेटिव सेंटेंस दे दिया. What is remission? Reduction in the period of sentence. Reduction in the period of sentence. Example क्या होगा? 20 years life imprisonment है, उसको 5 year कर दिया. Right? 20 years imprisonment can be reduced to 5 years. That is called remission. ठीक है, clear है? Now respite. Respite. No, respite means giving lesser harassment, lesser harsh punishment. Right? मान लो कि बहुत सारे special case है. If court has given some punishment which is very harsh. For example, a pregnant woman has received a punishment, right? But they needs rectification, needs a lesser harsh punishment. Then president can respite that, right? So, right, it refers to giving lesser harsh punishment. मान लो कि मेंटली कोई चैलेंज है, राइट? उसको बहुत ही डिफिकल्ट पनिशमेंट दे दिया, राइट? बट प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उनको थोड़ा सा पनिशमेंट कम कर सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल लिखिए. फॉर एग्जाम्पल लिखिए, प्रेग्नेंट वुमन, mentally challenged person, get respite. Now कितना हुआ? 1 2 3 4. एक होता है रेप्राइड. ये क्या होता है? To put stay on for the certain period of time on death sentence. That is called reprieve, right? देखिए, put stay on death sentence. Put stay on death sentence for a very short period of time.
मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस मिला, जिस दिन डेथ सेंटेंस है उसी दिन उसके घर में कोई मैरिज है, राइट? द फैमिली कैन रिक्वेस्ट फॉर रिप्लाई टू द प्रेसिडेंट, राइट? लिखिए why pardoning power is there in the why pardoning power to the president right answer a pardoning power is an independent power to the president. Pardoning power is an independent power given to the president pardoning power is an independent power given to the president to rectify any error done by the judiciary. अगर मान लो जुडिशरी से कुछ गलती हो जाता है ऐसा कुछ, तो प्रेसिडेंट उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट? इंडिपेंडेंट टू द जुडिशरी, राइट? सो दैट इज आर्टिकल 72, राइट? द गवर्नर हैज सिमिलर पावर बट देयर आर सम डिफरेंस, राइट? अंडर आर्टिकल 161 the governor has similar power. The governor has similar power. Yet there are two differences. First, right, the president can pardon sentence given by the military court, but the governor cannot. The president can pardon sentence given by military court, but governor cannot. Second point, the president can pardon a death sentence, but the governor cannot. The president can pardon a death sentence, but governor cannot. ठीक है? अब एक चीज मैंने आपको बताया, राइट, that governor has power to pardon in following cases any punishment or sentence given for the violation of union law, right, or any punishment or sentence given by the military court, right, or a sentence is a death sentence. Now we look at the last two, a sentence given by the military court or a sentence is a death sentence. In those two last category, governor has no power, but the governor can give pardon only in the case of when the sentence is for the sentence for violation of law. What law? State law. यहाँ पे यूनियन लॉ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए क्या है? यूनियन लॉ, वहां पर क्या होगा? स्टेट लॉ. इतना दिमाग में रखना है. यू कैन राइट इट एज ए नोट. राइट, द प्रेसिडेंट कैन गिव पार्डन if the sentence is for an offense against the union law, एग्जीक्यूटिव से पीटी में आया नहीं है बहुत दिन से, 6 साल से तो नहीं आ रहा है.
हाँ देखो क्या हो सकता है, वो आ भी सकता है, वी कांट से गारंटी कुछ नहीं है। वो एग्जामिनेशन हॉल में पता दिमाग घूमता है, अरे यार इसको तो छोड़ के चला था, ये भी आ गया। प्रेसिडेंट को कुछ पावर है सर, जैसा a person is in jail and set him free, president can do. ना सेट हिम फ्री, यस देखो ना, ये 4-5 तरीके का पावर है, तो लेसर हार्श हो सकता है, फ्री तो सबसे ज्यादा है, कड़ी तो जेल से रिलीज कर दो बोल। right. Let me one more thing, the president cannot use this power independently. The president will have to abide by council, the direction given by the council of ministers. ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। देखिए, the Supreme Court has examined, the Supreme Court has held that pardoning के बारे में लिखिए, क्या ये pardoning power review है? Is it can be reviewed by the Supreme Court? Is it that the pardoning power of the president or the governor in case of the state can be reviewed by the Supreme Court or the High Court? No. लिखिए, the Supreme Court has examined that the Supreme Court has examined the pardoning power of the president. The Supreme Court has examined the pardoning power of the president and laid down following principles. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं that the president has to follow or the governor has to follow. Right? First लिखिए, the petitioner has no right. The petitioner has no right to oral hearing. Oral hearing by the president. The petitioner has no right to oral hearing by the president. Second, the president can examine the case. The president can examine the case afresh and can take different decision from judiciary. The president can examine. The case afresh, of course, the president has to examine the case now. Yes. Afresh and can take different opinion from the judiciary. The president can give pardoning power only on the advice of the cabinet. The president can use pardoning power only on the advice of the cabinet. Right? The president is not bound to give reason for his or her order. The president is not bound to give reason for his or her order. ठीक है, अब देखिए क्या बोला है इसने. The pardoning. Fourth point, the president is not bound to give reason for his or her order. The president or जो president, if president has given order, he is not bound to give some explanation why I have given such kind of verdict. तो ये 4 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. नहीं, जुडिशरी ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है. जुडिशरी ने गाइडलाइन दिया है. Indian judiciary has become more powerful, na? Indian, while I'll teach you judiciary, it's very interesting how judiciary evolved as an institution of governance. Right? It has issued several guidelines
right? It has become kind of, legislature also, executive also, right? At the same time, it is facing several crises, and that's why Indian judiciary is called a paradoxical institution. Fine? Okay, right? Even this fifth point is very interesting. देखो fifth point क्या है? The pardoning power of the president is not subject to judicial review. The pardoning power of the president is not subject to judicial review, except the pardoning power of the president is not subject to judicial review, except when the presidential decision is arbitrary. Sir, where the Presidential decision is arbitrary. Now you can see it is a very ambiguous line. क्योंकि it is not subject to judicial review, but except the case where the president's decision is arbitrary. अब कोई भी decision arbitrary कह के आप judicial review में उसको ला सकते हैं, right? होता है ना? So like one more point, arbitrary लिख लिया, और malified, arbitrary और malified और discriminatory, अलग अलग word है, arbitrary, malified और discriminatory. Right, next point. When the petition is rejected by the president once, when the petition is rejected by the president once, no further petition can be filed on the same issue. No further petition can be filed on the same issue. चलो हो गया. Now write constitutional position of the president. Constitutional position of the president. अब देखो तीन आर्टिकल है जो पूरा डिफाइन करता है. कौन कौन सा? ओनली 3 आर्टिकल है, राइट? आर्टिकल 52 है, 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75. ये 3 आर्टिकल इनके पावर को डिफाइन करता है. Article 53, Article 74, Article 75. Yeah, you can make a triangle that 53, 74, 75. That is the president constitutional position. Right? What is Article 53? Right, the article. Right, Article 53, 74 and 75 defines the constitutional position of the president. Define? Constitutional position of the president. Right? India had opted parliamentary democracy. India had opted parliamentary democracy. In which the president is legal. The president is legal or constitutional or de jure head. De jure head.
president is legal or constitutional? और de jure head. इसका भी मतलब लीगल ही होता है. Legal de jure head. Article 53 says that Article 53 says that the president shall be the head of the executive. The president shall be head of the executive, and he shall exercise his power directly. He shall exercise his power directly or with assistance of subordinate officers. ये कहता है आर्टिकल 53. क्या कहता है? The president shall be the head of the executive and he shall exercise power directly or with assistance of subordinate officers. Okay. However, Article 74 states that there shall be council of ministers. There shall be a council of ministers to aid and advise. There shall be a council of ministers to aid and advise to the prime minister, to the president, sorry, to the president. Right? The president has authority to send the advice to the council of ministers for reconsideration on any decision. Right? But when the council of ministers advises the president again, then the president has to follow the advice. Now you got it? That there shall be council of minister, and whose heads council of minister? PM, to give aid and advice to the president. The president has authority to send back, decision to the council of minister to reconsider it. But once again, if that decision is sent to the president has to follow it. Similarly, जो बिल के तरीके बिल में है, राइट? कि कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी. ऐसी चला दूं क्या? बोलो ना. ठीक है? Similar like the bill, the parliament has sent the bill after the passing it, and the president has a right to rescind the bill for reconsideration. But again, if the parliament passes it, then the president has to sign it. Similar here, the council of ministers is there to aid and advise to the president. The president has authority to send that advice to the council of ministers to reconsider, उसको सोचने के लिए. But if the council of ministers again send the same advice to the president is bound to follow it. Right? Now again, right, Article 75
Article 75 states that there shall be a council of ministers headed by the Prime Minister. There shall be a council of ministers headed by Prime Minister. There shall be a council of ministers headed by the Prime Minister, collectively responsible to the lower house, collectively responsible to the Lok Sabha or the lower house. Right? समझ गए? इतना ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड अबाउट इट, राइट? लुक एट द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट. थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं लिखवा देता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये था कि शुड प्रेसिडेंट बी गिवन अ रियल पावर और नॉट, राइट? And there was a debate. There was again two groups. One group said yes, the president should be given the actual, executive power. But there was another group headed by B.R. Ambedkar who said that no, since we are borrowing the parliamentary system, right? And in the parliamentary system, head of the state is a ceremonial one, right? It's a figurehead, right? Who represents the nation but does not rule the nation. Who represents the nation but does not rule the nation. Like UK. Who is the symbolic head or figurehead in the UK? The Queen. Right? The crown भी बोलते. The Queen. Right? Queen. Crown भी दूसरा उसको explain करना पड़ जाएगा. Queen. Right? And who is the real head? The Prime Minister, right? So since we are, taking president because president is indirectly elected. The president is not directly elected by the people. So it is better to make the president ceremonial head, figurehead, who will represent the nation but not rule the nation. Who will be the real head? The real head will be the Prime Minister. ये इतनी बातें चर्चा लिखनी है आपको, ठीक है? क्या लिखो अपने आप लिख सकते हो कि यू कैन राइट इट. इट्स बेटर इफ यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. कैन यू? ओके, लिखिए तो पहले. चलो एक पैरा लिखो, फिर ऑल लिसन फ्रॉम एवरीवन कि क्या लिखा आपने. यही लिखना है? नहीं, जो चर्चा अभी मैंने किया है. भूल गए तो बताओ. सर होता है, भूल जाते इंसान. हाँ, जो प्रेसिडेंट को पावर देने के लिए बोले तो वो कौन सा ग्रुप था? There were two groups within the Constitutional Assembly. One group suggested that the president should have real executive power, right? हाँ? नेहरू थे क्या? नहीं. Actually काम मत थे, right? But एबेल वो जो नाम है मत लिखिए, right? You just search on Google then. अगर नाम हम देखना है तो, right? आइडिया रखिए कि दो आइडिया थे, और जिस आइडिया में जो मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बताया है, Ambedkar was in his opinion said that no, real executive power should be in hand of the Prime Minister. लिखिए तो इस बात को. And I know everyone will write differently. Fine. लिख लिया? बताओ क्या लिखा. Constituent Assembly stated that the President is the head of the nation who represents the nation but not rule the nation, as we are following UK or parliamentary system. And Ambedkar and his cabinet stated that the Prime Minister is the real head of the nation who rules the country. मानसी हो गया.
नहीं, लिखो 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 लिखो। अभी मुझे फिर से यूनिफॉर्मली लिखाना है। अभी लिखते थे। क्या लिखा? तुमने लिख लिया प्रधान? Nixon done? Read that, read out. नहीं लिखा? चलिए कोई बात नहीं है। बताइए क्या लिखा? Constituents Assembly, there are debate about giving real executive power to the president. But some, like Ambedkar, argued that the parliamentary system, Indian parliamentary system, is taken from the Britain. So the real executive powers would be in the hand of PM, and our ceremonial head would be president. ठीक है, ठीक है। सरबजी लिख लिया? बोलिए क्या लिखा? The president is the representation of the nation, but no rule of the nation. The real head of the PM, not president. This statement is given by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Very good. Council in the Constitution Assembly. Very good. Very good. Yes, Shivraj, done? लिखो, पढ़ो उसको, बोलो. Read out. What have you written? During the debate regarding the role of president, the assembly divided into two parties. Very good. One party supported the real executive powers for the president. On the contrary, the other party argued that the parliamentary democracy is borrowed from the UK. Thus, we shall assign the president as the QA head, just like the party. Very good. बहुत अच्छा है. हाँ, very good. Yes, Shubham, done? क्या लिखा? So very good. We have the president in the parliament, like crown in the UK parliament. Very good. So, very good. So, like the president who represents the nation but not rule the nation, and he is a mayor, figurehead. इतना लिखा, right? तो अब मैं आगे लिखा दूं कि क्या कुछ प्रेसिडेंट उन्होंने अपने पावर को एक्सरसाइज किया. Should I or should I dictate again? नहीं, I hope you have written. That Veni, have you done? What have you written? There is an argument regarding the role of the executive and constitutional assembly. One group is that the president is the real executive of the state, while Dr. B.R. Ambedkar and said the executive is in the Congress. Fine, fine. देखिए. Therefore, the president is considered as a figurehead or symbolic head in Indian parliamentary democracy. ठीक है? अगर पूछे तो आपको इसी को जस्टिफाई करना है. बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अभी बताता हूँ. लेकिन however, few presidents like Dr. Rajendra Prasad, comma, R.K. Narayanan, R.K. Narayanan, APJ Abdul Kalam, used executive power
more than the other presidents. More than the other presidents. फाइन. कौन कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद, के आर नारायणन और एपीजे अब्दुल. वो तो कहीं भी जाके घूम आते थे, राइट? Something special about that. Yeah, Rajendra Prasad, rejected twice or thrice to sign the bill, and then Nehru threatened that I will quit the prime ministership, and then he signed on it. He said, no, the president has a real power. Look at the constitution, read constitution, right? Nehru and Dr. Rajendra Prasad had several exchange of letters, right? The president, Rajendra Prasad, was emphasizing that the president has real power, right? But the first Prime Minister Jawaharlal Nehru was replying, no, we have opted parliamentary democracy, and in the parliamentary democracy, since Prime Minister has the real executive, therefore you are symbolic head. ठीक है? और आगे नहीं बढ़ाना है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म. नहीं बताना है, उतना हमें है नहीं, उतना पढ़ना नहीं है. What is presidential activism? Now I will move to Council of Ministers. क्या प्रेसिडेंट? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कुछ करना. वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा सा ही है. वाइस प्रेसिडेंट. Vice President. Right, it is the highest, it is the second highest, it is the second highest official position in India. Second highest constitutional position in India. अब लिखिए इलेक्शन. देखिए, इलेक्शन इज हेल्ड indirectly by an electoral college consisting of all elected and nominated member of the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha, consisting of all MPs, all MPs, right, elected and nominated. Election is held indirectly by an electoral college consisting of all MPs, right? The election is held on the basis of PRSTV. अच्छा, मैनर क्या होता है? मैनर ऑफ इलेक्शन, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सेम एज द प्रेसिडेंट, सेम एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मैनर होता है. अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सेम होता है प्रेसिडेंट का, एक अंतर होता है. क्या? हाँ, यस, he should be qualified to be member of the Rajya Sabha. First लिखिए citizen of India. If you have any confusion, ask me. हाँ. Second, एज कितना है? 35 है. 35.
थर्ड क्या है? होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। hold no office of profit. Fourth, should be qualified to be member of the RS. Should be qualified to be member of the राज्य सभा। ठीक है, चारों क्वालिफिकेशन लिख लिया। राइट, लिखिए नॉमिनेशन। When he done, now write nomination. Nomination. देखिए, any candidate needs 20 proposer and 20 seconder. President में कितना था? 50 proposer and 50 seconder. Here you need 20 proposer and 20 seconder. And 50,000 deposit to with RBI. 15, 20 proposer, 20 seconder, and 15,000 rupees deposit with RBI. ठीक है, यू हैव टू। अच्छा, टेन्योर क्या होता है? 5 years टेन्योर होता है। किससे? फ्रॉम डेट ऑफ। However, the vice president can resign. अच्छा, resignation letter किसको देगा? However, the president can resign any point of time. The vice president, yeah. The vice president can resign from his office any point of time. However, the vice president can resign from his office any point of time by giving resignation letter to the president. By giving resignation letter to the president. Fine. रिमूवल क्या है इनका? रिमूवल के बारे में बात किया हमने, 2 बार बात किया। क्या? या सिंपल मेजोरिटी नहीं है, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, और ये शुरू कहाँ पे होगी? राज्यसभा। देखिए, the vice president removal does not need impeachment. The vice president's removal does not need impeachment. The Constitution provides simple method. The Constitution provides simple method. He can be removed. He can be removed by a resolution passed by. He can be removed by a resolution passed by effective majority. Effective majority in the Rajya Sabha and approved by the Lok Sabha with simple majority. लोक सभा में बस सिंपल मेजोरिटी चलेगा। अच्छा, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है पता है? या टोटल माइनस वैकेंट। टोटल माइनस वैकेंट, वो टोटल स्ट्रेंथ हो गया क्या? कुछ मान लीजिए 245 है, ठीक है, और मान लीजिए कि कितना नहीं है इसमें, टोटल की 5 नहीं है, ठीक है, कितना हो गया? 240। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगा? या k/2 + 1 कितना होगा? 240
by 2 plus 1 कितना होगा 120 plus 1 121। ठीक है, राज्यसभा में चाहिए और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चलेगा। एक नोट लिख लीजिए। देखिए, the resolution to removal of the vice president shall always be introduced in the Rajya Sabha. The resolution to remove the vice president shall always be introduced in the Rajya Sabha after giving him a 14 days prior notice. Saurabh बाहर है। After giving him 14 days prior notice. अच्छा अच्छा, ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है? क्या ग्राउंड है भाई? देखिए, ग्राउंड ऑफ रिमूवल या ये जो प्रोसीजर है ये द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा ओनली। या ये इसके लिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट उसका स्पीकर है, इसके लिए एक्स ऑफिशियल या एक्स ऑफिशियल की वाइस प्रेसिडेंट का अलग सा कुछ नहीं। तो उधर का एक बार रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पीकर से भी निकल गया और वाइस प्रेसिडेंट वो वाइस प्रेसिडेंट खत्म तो वहाँ एक्स ऑफिशियल भी खत्म ना। नहीं, मतलब एक्स ऑफिशियल के लिए पहले वो लोग उसमें डालेंगे ना कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए दोनों की सेम ही प्रोसीजर है। He is removed as an ex officio. His salary gets as an ex officio, but elected as a vice president. लेकिन वो दो रोल प्ले कर रहा था ना। Exactly. तो अभी एक रोल जाएगा कि दोनों चले जाएगा? एक साथ दोनों चला जाएगा। एक साथ दोनों चला जाएगा। ठीक है, एक चीज ग्राउंड ऑफ रिमूवल। लेकिन the constitution does not mention सौरभ तो यहाँ बैठा है, मैं सामने देख रहा हूँ किसी को जाकर सौरभ है। The constitution does not mention the ground on which the vice president can be removed. ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना कि ओके द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। फर्स्ट, ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, ग्राउंड ऑफ दिस, ग्राउंड ऑफ दैट, राइट, नन ऑफ दिस। तो होगा नन ऑफ दिस। हाँ, ऑप्शन ठीक है, उसका कोई क्या ग्राउंड है ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं करता है। समझ गए? चलिए लिखिए पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, first he acts as an ex officio chairman of the Rajya Sabha. He acts as an ex officio chairman of the Rajya Sabha, right? In this capacity, his power and functions are similar to the Speaker of the Lok Sabha. क्या होता है? He acts as a Speaker of the, his power and functions are similar as the Speaker of the Lok Sabha. It means the Vice President being ex officio in the Rajya Sabha is a guardian within the house. नहीं, हाँ, सारा काम वही करवाता है, जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, राइट, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन पे निर्णय लेना हो, राइट। सेकंड पॉइंट यू राइट, he acts as a president when vacancy occurred. He acts as a
President, when vacancy occurs, due to the President's resignation, impeachment, death, illness, or any other reason. He acts as a President when vacancy occurred. When vacancy occurred due to the President's resignation, impeachment, death, illness, or any other reason. बंद कर दो. But let me tell you, when the vacancy occurs due to the completion of tenure of the President, can the Vice President act as a President? When vacancy occurs due to the tenure of the President, मान लो कि 5 साल हो गए President का, ब्रेक तो नहीं मिलेगा ना? हाँ? प्रेसिडेंट कंटिन्यू जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट तभी जाता जब पूरा Exactly. But क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगी कि अगर वैकेंसी क्रिएट हो गया because the President has finished the tenure, right? Can the Vice President resume the office of the President? No, he cannot. The President can extend. Yes, you are right. The President can extend, right, until the successor resumes the office. ठीक है? ठीक है? तो ये लिख लीजिए या मैं छोड़ दूं लिखाना? You will keep in your mind. Fine? Okay. लिखवा दो, लिखो. सर लिखवाया हुआ है ना? एक बार ऑलरेडी जब प्रेसिडेंट पे जब लिखवाया है, लिखिए. ठीक है? अच्छा, डन. वाइस प्रेसिडेंट डन. चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने कितने लोग होते हैं? एक तो होता है, टोटल कितने लोग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट हो सकता है? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ना. आप 91st अमेंडमेंट देखो ना. 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Total as 15% of the total strength of the house. House means total strength of the parliament or total strength of the Lok Sabha? No. House. Total strength of the Not parliament. house. यानी that is Lok Sabha. Total strength of the Lok Sabha. So इससे ज़्यादा नहीं हो सकते. Generally क्या होता है? Council of Ministers is a group of people. A group of ministers. क्या मिल रहा है? अच्छा रहने दो. 15% of the total strength of the lower house. ठीक है? Right? कितना होता है maximum strength? Yeah. चलिए. What is council of ministers? It is a group of ministers. Now, if we define, council of ministers, then there are ministers. Right? There are ministers. Then there are ministers of state. Minister of states. एक होता है डिप्टी मिनिस्टर. एक इसी में होता है, इसी में एक कैटेगरी होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेज. ठीक है? तो ये चौथा कैटेगरी है. फाइन. अब आप देखोगे कि मिनिस्टर का स्ट्रेंथ कितना होता है. ऑल एक्चुअली पोर्टफोलियो, राइट, डिपार्टमेंट्स है कॉल्ड मिनिस्टर्स, राइट, एंड दे आर कॉल्ड कैबिनेट. They are called cabinet, right? It is headed by Prime Minister.
Now, if you see the Council of Ministers is also headed by Prime Minister. Headed by PM. इतना समझ में आया कि नहीं बता दो बस, और कुछ नहीं है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फाइन, आर्टिकल 74, 75 we talked about, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे यहाँ पर आर्टिकल 74, 75 को, और कुछ नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, we'll talk about प्राइम मिनिस्टर। So, okay, क्या? What is the function of these ministers? Council of Ministers. पहले तो ये समझिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, राइट? नाउ if you see the council of minister function is to govern the country, right? For example, if you see there are cabinet minister, so there are cabinet minister consisted by all ministers, and its strength is small, approximately 20 to 22 ministers. There are 20 to 22 ministers. For example, finance minister, defense minister, right, prime minister, then home minister, right? They are the ministers, right? Minister of states are also the similar number, but they are, assistant to the minister. हाँ, subordinate हो गया। और ये जो डिप्टी मिनिस्टर है, वो भी उसी का सबऑर्डिनेट है, ठीक है? ये मिनिस्टर ऑफ जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, इसका ये नहीं होता है, इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, पर वो मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। फाइन, अब इनका पूरा काम क्या है? इनका पूरा काम है गवर्न करना। उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट? और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर होता है? तो लोकसभा, यही है। कोई आइडिया? और कुछ नहीं इसमें, राइट? वी नो दैट आर्टिकल 74. What is article 74? Article 74 says that there shall be a council of ministers headed by the prime minister to give aid and advice to the president, right? यही है। आर्टिकल 75 क्या है? आर्टिकल 75 क्या है? उसमें बहुत सारे क्लॉज है। एक क्लॉज है कि the council of minister should not exceed more than 15% of the total strength of the Lok Sabha। एक और important clause है कि the council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha, right? And और है कि the prime minister shall be appointed by whom? Prime minister will be appointed by whom? President. The prime minister shall be appointed by the president, and the other ministers shall be appointed by president on the advice of the prime minister। ठीक है, तो लिख ले क्या ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। देखिए आर्टिकल 74 and article 75 talks about, article 74 and article 75 talks about council of ministers, council of ministers। ठीक है, आर्टिकल 74 तो हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 you can write, ठीक है, the PM shall be appointed by the president, the PM shall be appointed by the president, and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the PM. The prime minister shall be appointed by the president, and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the PM. The prime minister shall be appointed by the president,
and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the PM. Now tell me one thing, can President appoint any person as a Prime Minister? Then Any person in what sense? in what sense, for example, President is now Murmu, Madam. Can she appoint any person as a Prime Minister? From Rajya Sabha and Lok Sabha, yes. No, there is no such rule. Constitution is silent here. She can. But as a tradition or convention, right, she can appoint a person who has secured majority, right, or who is the leader of the majority party in the Lok Sabha. But in case of hung assembly, when in the case of hung parliament, the president has discretionary to appoint any person as a prime minister. ठीक है? लेकिन सर वो प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 74 के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्ट एंड एडवाइस के वगैरह नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकता, हाँ। प्राइम मिनिस्टर से चूज करेंगे एक्सेप्शन। नहीं, एक्चुअली क्या है कि प्रेसिडेंट जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा तब ना वो उसके एड एडवाइस से काम करेगा। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑर्गेनाइज कैसे होगा, कैसे ऑर्गेनाइज बनेगा कैसे? In that case, the president will appoint the prime minister, and the president will appoint also other ministers on the advice of the prime minister, right? On the as per the convention of parliamentary democracy, the president appoints, right, prime minister to the person who has, who is the leader of the majority party within the Lok Sabha, right? He cannot go and appoint Shubham as a prime minister. Fine, he has to be majority leader. मैंने वही बोला, कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिग्विटी है, बन सकते हो, वो बन सकते हो, आराम से बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन के बाद कह रहा हूँ कि आप नहीं बन सकते या मैं नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता, राइट? ठीक है, वो देखो ना, क्या नाम है मूवी, कौन सा है, अनिल कपूर वाली, एक दिन का चीफ मिनिस्टर, नायक मूवी है बस। You have to fight election. Sir, without becoming MP, can't you become PM? Yeah. Without becoming MP, can't you become PM? Yes, for 6 months you can become prime minister. मतलब वो पार्टी का हेड है, हाँ, वो बन सकते क्या? पार्टी का हेड है, but if party has majority in the Lok Sabha, then बन सकते हैं, हाँ, तब बन सकते, क्यों बन सकते? But वो MP नहीं है, हाँ, वो MP नहीं है, हाँ, तो भी बन सकता है, तो भी बन सकता है, but 6 महीने तक के। Within 6 months, that person has to acquire the membership of the either of the house. अभी सपोज PM या CM है सर, वो मर गया, उसका बेटा को CM बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? वही तो हुआ राजीव गांधी का क्या हुआ? एग्जैक्टली, राजीव गांधी का क्या हुआ? राजीव गांधी ना सीएम, मतलब ना मेंबर था हाउस का, कुछ भी नहीं था। वो फ्लाइट चला रहा था, उसको पता चला कि मैं पीएम बनने वाला हूँ, राइट? वो फ्लाइट चला रहा था, उसको पता चला कि मैं पीएम बनने वाला हूँ। हाँ, क्या लिखा? सर ओनली उसका बेटा बन सकता है, और यार कोई भी बन सकता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। बेटा तो एक वर्ड सुने हो, कैपिटल, कैपिटल वर्ड सुने होगे, उससे पीछे लगा दो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कैपिटल किसको मिलता है? जिसके पिताजी बहुत बड़े मिनिस्टर होते हैं, उसी को इनहेरिटेंस में मिलता है। जगन मोहन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, हाँ है कि नहीं? उस पर बहस नहीं करते हैं। दूसरा क्लॉज लिखो, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, सेकेंड क्लॉज, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग total number of ministers including the prime minister, total
number of ministers, clause है इतने सारी चीज हैं. Total number of ministers including PM in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total, including PM in the Council of Ministers shall not exceed 15% of total strength of the Lok Sabha. Right? This provision was added by 91st CAA. This provision was added by 91 CAA. Fine. Third clause. A member of either house of the parliament, belonging to any political party. A member of either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified. A member of the either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified from the ministers. From the Council of Ministers. From the ministers or from the Council of Ministers, whatever you can write. तो ऐसा पर्सन PM परमिशन. मान लो कि मैं हूँ, मेंबर हूँ हाउस का, मिनिस्टर भी हूँ, बट कल मैं डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड हो गया मेंबरशिप से. इसका मतलब मैं मिनिस्टरशिप से भी हाथ धो बैठा. तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसा पर्सन को PM बना सकता है. कैसे प्रेसिडेंट? जो डिफेक्शन में फिर उसको डिफेक्शन में है वो मिनिस्टरशिप तो गायब हो जाएगा उसका. फिर से प्राइम मिनिस्टर देखो होने को कुछ भी हो सकता है. राइट? प्रैक्टिकलिटी है वो तो मेंबरशिप ही खो देगा ना हाउस का. बट एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर. वो पर्सन को फिर से लाया तो 6 महीने के अंदर उसको 6 महीने के बाद फिर से उसको मेंबर बना दो. दैट कैन बी डन. बट ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं कर सकते. कन्वेंशन के हिसाब से नहीं होता है. बट अभी तक हुआ नहीं है. बट पॉसिबिलिटी है. डेमोक्रेसी है ना, इतने लोग प्लानिंग बन गया. एग्री हो गए कि इतने लोग है पार्लियामेंट पॉलिटिक्स यस मेड दैट टॉप प्राइम मिनिस्टर. राइट? एक चीज और लिखिए. The minister shall hold office till the pleasure of the president. The minister shall hold office till the pleasure of the president. ठीक है. और वो जो एक बताता हूँ हमेशा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो भी इसी का पार्ट है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. Right? Collectively, right? Then the president shall administer. Next, the president shall administer. The president shall administer the oath and secrecy of office to ministers. The president shall administer the oath and secrecy of minister. Oath and secrecy of office of ministers. 7th, देखिए, a minister who is not member of either house, a minister who is not a member of either house of the parliament for consecutive 6 months
a minister who is not a member of either house of parliament for consecutive 6 months shall cease to be a minister. Shall cease to be a minister. सब आर्टिकल 75 है. बैरक को उठाना और देखना सब उसी में से लिखवा लो. मैं ऊपर से टपका नहीं रहा हूँ कुछ भी. हाँ बिल्कुल सब किताब की बातें थी. एक चीज बता दूं कि इस बार अभी जो the current council of minister, you can see there was one person who was not a member of either of the house but became a very important minister. Can you identify that person? Council of minister this time in 2019 there was a one minister who was not either. He is very popular as Jaisankar. As Jaisankar was not a member of either of the house. जयशंकर नहीं था. कंटेस्ट इलेक्शन किया था क्या कहीं से? बताओ मुझे. मिनिस्टर है. भाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है. क्या बात करते तुम? हर जगह घूमता है पूरी दुनिया. आईएफएस लग रहा था. हाँ अरे भाई आईएफएस पहले था. वो मिनिस्टर बनने से पहले रिटायर किया और मिनिस्टर बन गया. वो तो आईएफएस लग रहा था. और बाद में राज्यसभा से he became the member of the Rajya Sabha. No, he's an external affair minister. He's a part of the council of minister. He's a part of the cabinet. हाँ ठीक है. सर प्लान तो अच्छा है सर. प्लान तो अच्छा है. पहले आईएएस बना के उसके बाद रिजाइन करके मिनिस्टर बन गए. Yes, there are several routes. There is no more fixed route. ठीक है. चलिए ये हो गया. One more thing. The salary and allowances of minister shall be determined by the parliament. The salary and allowances of ministers shall be determined by parliament. ये है आर्टिकल 75. ठीक है. चलिए अब हम बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर. काफी है. प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ना है. खत्म ही कर लो. प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा खत्म. रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बताना है कुछ नहीं. 10 मिनट लगेगा मुझे खत्म करने. थोड़ा जो को करना है तो कर लो. लास्ट को 10 मिनट में आराम से खत्म करके फिर कल जुडिशरी शुरू कर देंगे. राइट बेटर ना. हाँ क्यों लिंगरिंग करना इसको. एक चीज को खींच रहे. अच्छा शैडो कैबिनेट आई हैव टोल्ड यू. अच्छा व्हाट इज किचन कैबिनेट? जो पीछे से बात करते हैं. दूसरे के कंधे पे गोली चलाना. जैसे फॉर एग्जांपल can you figure out who is the kitchen cabinet in this NDA government? Who is a part of the kitchen cabinet? Huh? Amit Shah, yeah, very good. और राहुल गांधी भी. और लालू प्रसाद नहीं है इसमें क्या? सर कैबिनेट की हेड जितने हैं या फिर a cabinet within the cabinet. राइट. अब मान लो कि 40 लोग कैबिनेट में हैं. मतलब 20 लोग कैबिनेट में हैं. राइट. अब उसमें मैं पीएम हूँ. मेरे जो खास दोस्त हैं 2-3 राइट वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं. कुछ भी डिसीजन होगा. डिसीजन मेजरली यहाँ पे होगा और फिर बोलेंगे अच्छा जगनमोहन ऐसे करिए ये काम कर लेते हैं. वो बोलेगा हाँ सर. प्राइम मिनिस्टर को कौन मना करता है. यही काम करते हैं. फिर हमारा वही काम होगा. It is an informal grouping consisting of Prime Minister and other influential minister within the Council of Ministers. That is called kitchen cabinet. Within the cabinet. A cabinet within the kitchen cabinet. अभी बोलते 2.5 आदमी का ये पूरा सरकार है. Only 2.5 people are running this government. Who are the two? Amit Shah ji and Modi ji. और आधा कौन है? पूरा कैबिनेट है. वो तो हाँ पूरा जोड़ लीजिए आप. राइट. हाँ अब पॉलिटिकल इकोनॉमी को मत घुसिए. किचन कैबिनेट पता है
Kitchen cabinet is a cabinet within the cabinet. That is called kitchen cabinet. It is an informal group, and especially it evolved during the Indira Gandhi. सर आप बैठ जाइए। हाँ नहीं ठीक है मैं बैठ जाऊँगा आराम से। अब बताओ तुम्हारा तो हो गया पॉलिटी खत्म भाई इस वीक में मुझे लगता है। पॉलिटी खत्म। और क्या करना है पॉलिटी में? और क्या पढ़ा है? गवर्नेंस तो जुडिशरी पढ़ाएंगे अभी आपको, पंचायती राज पढ़ाएंगे आपको, अभी टेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। सारे कमीशन टेंशन मत लो। आयर छोड़ दो, आयर भी तो खत्म हो गया, 2 दिन बचा, ये भी खत्म करना है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं आराम से पढ़ाता हूँ, जो चीजें अब मान लीजिए इसमें क्या उतना ही है तो उतना ही पढ़ाना है आपको। आप मैंने अपना टाइम रिड्यूस करूंगा, फंडामेंटल राइट में इतना टाइम नहीं देना चाहिए, बट अगर मैं इतना टाइम ना दूं तो हर चीज अच्छे से बता ना पाऊँ। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, सर कितना लिखा रहे हैं, सर कितना होता है। क्या है मेरे कारण देख से वो बैच में या विवेक सर के बैच में बिकॉज़ सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मेरा प्रिंट आउट है प्रियमल का 1 पेज का नोट है बस। उनका 1 हफ्ते में प्रियमल खत्म, फंडामेंटल राइट्स खत्म, अभी डीपीएस भी चल रहा है। फंडामेंटल राइट 1 हफ्ते में खत्म, प्रियमल भी खत्म, सब खत्म। अच्छी बात है वो तो, फिर तो 10 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगा फिर तो। हाँ शुभम को ऐसे चाहिए 10 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगा फिर तो। हाँ जा फिर हवाई जहाज से उड़ो इधर उधर। लगता है दोनों बैच का इसलिए वो 4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ेगा सर। हां वो भी एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट कर दिया। कौन? तुम एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो? बहुत शाहरुख शुभम शाहरुख सर गवर्नेंस आप पढ़ाओगे यार जो मुझे कहा जाएगा पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर मुझे नहीं कहा गया तो हाँ कौन बोलता है? और मैनेजमेंट जो बोलती है हमें वो हम सर वो मैनेजमेंट कौन है सर? वो मैनेजमेंट कौन है? पीएम जैसा काउंसिल मिनिस्टर जैसा कौन है वो? ये तो दिल्ली का सीन हो गया। इसे आपसे पूछा तो बोलता गवर्नर से पूछो, गवर्नर से पूछा तो बोलता आपसे पूछो। मैनेजमेंट मींस सी प्रिया मैम अगर हमें देंगी तो हम पढ़ाएंगे, नहीं अगर किसी और टीचर का साइन होगा तो वो पढ़ाएंगे आपको। सब लोग पढ़े प्रिया तो हाँ तो इफ दे विल अलाउ मी टू टीच आई विल टीच गवर्नेंस। अगर कोई क्या हुआ रिकॉर्डिंग हो रहा है कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम हो तो प्रिया मैम को बात करते ना, इसमें कौन है हिडन एजेंडा में बता रहा हूँ जो थोड़ी बोल रहे थे ऐसे जो तो आप हाँ ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ऐसा क्या है? दिस इज सॉल्यूशन। हाँ इसके लिए सिविल सर्वेंट बनना है। प्रॉब्लम चलो तो ठीक है लिखना। टाइम हमारे पास कितना है? वी हैव 20 मिनट्स, अभी भी 5-10 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ बोल सर बोलो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है डिस्कस हाँ करते एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते। 1 हफ्ता यस एक हफ्ता नहीं यार, 2 दिन डिस्कस करोगे हो जाएगा। कैसे लिखना है आंसर? यस तो क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे क्वेश्चन देख रहे हो कुछ है? हाँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? लाइक वो जो राज्यसभा की बोल रहे थे वो तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ बहुत सारे मिल रहे होंगे यार, ऐसा तो नहीं कि एक दो होगा ऐसा कि तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज सारे आ रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो भी सवाल है, चाहे वो लोग स्पीकर से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्लियामेंट मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो। अभी जुडिशरी पढ़ाएंगे आपको कंपोजिशन से क्या फेडरलिज्म से अलग-अलग पार्लियामेंट से कंपैरिजन। अच्छा यूके पार्लियामेंट यूके या फ्रांस की सेकुलरिज्म तो मैंने बताया ना फ्रांस सेकुलरिज्म, मैंने बताया फ्रेंच सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म यूएस का कैसा है, इंडिया का कैसा है बताया। एनसीईआरटी यूएस के लिए रेफर करते हैं। हाँ मैंने रेफर भी किया था राइट। आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी यूके पार्लियामेंट को भी पढ़ाया, थोड़ा इंडियन पार्लियामेंट को भी पढ़ाया है। जुडिशरी में थोड़ा बताना है मुझे कि कैसे यूएस में होता है और
ये यूके में है और इंडिया में है, ठीक है। चलो प्राइम मिनिस्टर को खत्म करो उसको, प्राइम मिनिस्टर खत्म कीजिए, इसको रखना नहीं है। देखिए इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी PM is the real head. PM is the real head. Don't say de facto. जो अगर हम कहते हो de facto कहीं भी लिखा हुआ है काट दो उस वर्ड को। de facto मतलब होता है मतलब नहीं, not legal, not legal, absurd कर लिया है, illegal टाइप का। But Prime Minister is not illegal. Don't say de facto. He has real power, right? But the Prime Minister is not de facto power, right? Shall we come? In parliamentary democracy, PM is the real head of the government. He is first among equals. He is first among equals, and captain of the cabinet. Captain of the cabinet. Right? If the Council of Ministers is a solar system, then the Prime Minister is sun. उनके importance को जरूर लिखना है, right? Prime Minister के importance को. If the Council of Ministers is a solar system, then Prime Minister is a sun, right? Around which all planet revolves. Around which all planets revolve. He is central to the formation of Council of Ministers. सौरभ पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट क्या होगा बोल Huh? प्रेसिडेंट क्या होगा बोल रहे हैं। Right. His importance is so much so that the parliamentary democracy is called as prime ministerial form of government. So Is that the parliamentary system of government is known as prime ministerial form of government. Right? ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बताया ना प्राइम मिनिस्टर का। known as Prime ministerial form of government. Parliamentary system of government is also known as prime ministerial form of government. क्यों प्राइम मिनिस्टर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? कैबिनेट का इतना, and who heads the cabinet? Prime Minister. I taught you parliamentary system of government. It is known as prime ministerial, it is known as westministerial, it is known as cabinet form of government. Fine. ठीक है, पैरा चेंज करो और लिखो the prime minister is appointed by the president and all ministers are also appointed by the president on the advice of the PM. अच्छा, टेन्योर क्या होता है PM का? कितना होता है? लिखिए, ministers including prime ministers including PM shall remain in office till the pleasure of the president. तो कोई कर सकते हैं। हाँ,
डिसॉल्व कर देगा लोकसभा, खत्म। उसके लिए भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस चाहिए होगा। उसके लिए भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस चाहिए। चेक है भी, हाँ हाँ, एड एंड एडवाइस चाहिए। बट अगर मान लो कि कोई अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट होना चाहे, राइट, बंद कर देगा। हो सकता है। अब अलग अलग क्लॉज है, वो उस क्लॉज को ज्यादा प्राथमिकता देगा। हाँ उसका, हाँ हाँ, ये तो अगर लड़ाई होगी तो होगा। बट क्या लिखा? द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम रिमेन इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, इट डज नॉट मीन दैट the president can remove PM at any point of time. It does not mean that the president can remove the PM at any point of time. Right? The PM can remain in office right, as much as he holds the majority of the house. As long as, not much, as long as he holds majority of the house, but not more than 5 years, है ना? उसका लोकसभा का टेरिटरी खत्म हो जाएगा, but not more than 5 years. Only अगर सर इमरजेंसी होता है तो 1 year एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी में तो 1 year सक्सेसिवली आप कितने बार कर सकते हैं? सर हाँ, अगर कोई अथॉरिटी प्रेसिडेंट आए और वो डिसॉल्व कर दे लोकसभा को, तो उनका डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। हाँ, ये तो चेक बैलेंस है ना। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता, राइट? तो कैसे, तभी तो सिस्टम मेंटेन रहेगा ना। अदरवाइज किसी को एक को मौका मिलेगा तो वही ग्रैब कर जाएगा पावर। नहीं, सब तो ऐसे ढूंढता रहता है कि राइट, एवरी पॉलिटिशियन रिमेन इन searching for an opportunity, right, to become authoritarian. But there are institutional arrangements. That's why institutions are very important, right? It takes long time to create an institution, to build an institution, but it takes a very short of span of time to smash the institution, right? Role of the prime minister. Role of the prime minister. Others point लिख लीजिए. Role of the prime minister. First लिखिए, he is the chief spokesperson of the government. He is the chief spokesperson of the government. As he announces major policies, schemes and welfare measures. Right? Second, PM defines domestic as well as international policies. PM defines domestic as well as international policies of the government. Right? Third, he presides all meeting of the cabinet and council of ministers or any other meetings. जहां भी मीटिंग होगा, he will preside. Fine. He chairs Niti Aayog, National Integration Council. He chairs
नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ISC, इंटर-स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, right? He heads इंटर-स्टेट काउंसिल, इंटीग्रेशन काउंसिल, नीति आयोग, और एक है डोमेस्टिक वाटर काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर-स्टेट काउंसिल, and national water resource council. Fine. He chairs, or he is the head of the council of minister. He is head of the council of minister. He is head of the council of ministers, and being head, he recommends to the president. He, as being chair of the council of ministers, he recommends to the president to appoint chairmen of various commissions. He recommends the president to appoint chairmen of various commissions like UPSC, Finance Commission, CAB, Election Commission, etc. Right? He is like a bridge between the council of ministers, and he is like a bridge between the council of ministers and the president. Right? He gives all information required by the president. He gives all information required by the president related to administration of India. He gives all information required by the president regarding administration of India and all proposed bills. Right? He advises the president to appoint council of ministers. He advises the president to appoint. अरे ये तो लिखा दिया था पहले यार, लिखवा दिया था ना, मत लिखो. He can ask to the president. इसी point. नहीं, next point. ये लिखवा दिया था ऑलरेडी, मत लिखिए. क्या लिखा? To remove any ministers. To remove any ministers. He can advise the president. Next point. He can advise to the president to dissolve the Lok Sabha. To dissolve the Lok Sabha. Comma, to summon and prorogue the Lok Sabha. To summon and prorogue. Prorogue पता है ना? सेशन जब खत्म हो जाता है तो पूरा जो टर्मिनेट कर जाते हैं सेशन को, that comes to the prorogation. Summon and prorogue the Lok Sabha. The PM can bring government to fall. The PM can bring government to fall by submitting his resignation. किसको सबमिट करेगा? By submitting his resignation to the president.